Hello everyone, welcome and I can see that आप लोग अभी भी आ रहे हो और आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी चैट में आ चुके हो और बहुत सारा कुछ बोल रहे हो एक दूसरे को और लड़ाइयां भी हो रही हैं। पर आज मेरे पास आए हैं बहुत स्पेशल गेस्ट। उन्होंने एक इतना अच्छा गाना रिलीज किया है, बॉस लेडी, जो कि रुबीना दुलेक के ऊपर है और आप लोग तो बिल्कुल उनके इतने बड़े फैन बन गए हो और आपको ये गाना भी बहुत अच्छा लगा है। पर शायद आपको ये नहीं पता है कि ये बंदा जो आज आया है, ये जो डीजे है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, रैपर है, वो पहले अपनी जिंदगी जहां से शुरुआत की थी वो टोरंटो से उन्होंने म्यूजिक की जर्नी शुरू की थी और अब वो है यूके बेस्ड आर्टिस्ट। उनका नाम है, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, प्लीज वेलकम रोच किला। हाय बॉस, थैंक यू, इतना वार्म स्वागत दिया मेरा आपने। हाँ, वो तो बनता ही है। आपने जो इतने अच्छे-अच्छे गाने करे हैं, आपने इतना सारा मतलब इतना बड़ा जर्नी रहा है आपका। तो शुरुआत करते थैंक यू सो हैं मच। आपकी जो जन्मभूमि है वो है लिबिया। ये कैसे हुआ? आप लिबिया में कैसे जन्म लिया आपने? ये ऊपर वाले की मर्जी थी, मेरा मेरा जन्म जहाँ होना था वो हो गया। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, मेरे डैड जो थे वो एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं। एंटोमोलॉजिस्ट, जिसको पता नहीं एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है, ही इज बेसिकली द डॉक्टर फॉर मलेरिया एंड दोस टाइप ऑफ डिजीजेस। सो यू नो, बैक इन द डेज नॉर्थ अफ्रीका वाज अ बिग हब। काफी वहां पे मलेरिया अभी भी चलता है। अफ्रीका में तो बहुत मलेरिया होता है, तो वहां पे मेरे डैड की पोस्टिंग हो गई थी। सो बेसिकली आई टेल यू दिस, मेरे डैड को दो ऑप्शंस थी, एक लिबिया की ऑप्शन थी और एक वेनेजुएला की ऑप्शन थी। तो वेनेजुएला आई थिंक फ्रॉम हमारे देश से बहुत दूर है, तो मतलब है यू इवेंचुअली गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप साउथ अमेरिका चले जाते हो। सो ही वाज लाइक ओके, मिडल ईस्ट अफ्रीका इज नॉट टू फार, तो मतलब है इट्स नॉट दैट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, उधर चले जाते हैं। वहां I studied in a British school over there, and then at the age of 10 we migrated, हम टोरंटो कनाडा। हमारा पहले प्लान था हम यूके आएंगे, यूके सेटल होंगे। लेकिन जब हम यूके आए तो हमने देखा ये तो ऐसे है जैसे वापस इंडिया चले गए हम, तो इधर छोड़ के हम आगे कनाडा जाते हैं। So we went to Canada at that time. It was very early on in the Canadian history because आपको अभी भी पता है कि कनाडा की population बहुत कम है compared to US. I mean size इतना बड़ा है, लेकिन we only have about 38-40 million people. So they were asking for people to come. So we went out there and we were very limited amount of matlab not even just Desis, I'm talking in general, the population culturally was just starting to develop, and then eventually became such a massive multicultural city in the world, Toronto. And I grew up there and मुझे अच्छा लगा वहाँ पे पढ़ के, क्योंकि वहाँ पे सारे देशों से लोग थे. So it wasn't just गोरे काले देसी नहीं थे, मतलब it was all types of, all walks of life, from Africa, South America, Mexico. So I think एडवांटेज मेरी ये हुई कि मुझे अर्ली ऑन इन लाइफ देखने को मिला दूसरों के कल्चर को अपनाना, अंडरस्टैंडिंग करनी, और आई थिंक दैट हेल्प मी म्यूजिकली आल्सो, क्योंकि फिर आपको पता है म्यूजिक इज यूनिवर्सल, लैंग्वेज के बारे में नहीं होता, इट्स अबाउट अ फीलिंग। तो मैं रेगे म्यूजिक में, क्योंकि जहां मैं पल बढ़ा था वहां पे बहुत जमैकन लोग आ रहे थे कैरिबियन से, तो मतलब मेरे पढ़ना, हैंग आउट करना, तो मतलब वो एक एब्जॉर्ब हो गया। प्लस वी हैव ईस्टर्न रूट्स, so हमने दोनों को बीच में मिला के एक नया ही स्टाइल हमने क्रिएट किया, जिसमें रोच किला ने जन्म लिया। हाँ, तो आपने बोला रोच किलर। रोच किलर मतलब हिंदुस्तान में तो परफेक्ट जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे रोचेस होते हैं। पर आपने ये रोच किलर नाम कहाँ से लिया? व्हाट इज दैट अबाउट? बेसिकली मैं 12 साल का था। 12 साल का जब मैं था, मुझे भूत सवार था मेरे सर पे कि मैंने म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, घर में गाता फिरता था, तो मेरा डैड जो कहता था, भाई तू ऐसा कर, तू अपने स्कूलिंग पे ध्यान दे, गाना वाला छोड़ दे। तो उस दौरान मुझे एक प्रोड्यूसर मिला, उसका नाम था अर्ल फर्नांडिस। वो था एक्चुअली बैक इंडिया से, गोवा से था। So he looked at me, he said, "I like आपका स्टाइल, मुझे पसंद है, very reggae स्टाइल है, साथ में पंजाबी है, तो let's do music." मैंने कहा बहुत खुशी है। कहता मैं तेरा नाम ना, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा I want to be named as Junior Indian। उस वक्त एक अपाची इंडियन एक आर्टिस्ट था जो बहुत बड़ा था, तो मैंने कहा मैं I want to be Junior We Indian। all know Apache Indian। Yeah, exactly right। So Junior Indian मुझे भूत चढ़ा, नहीं Junior Indian रखना है। तो उसने कहा देख, Junior Indian अच्छा है, लेकिन वो it's too close to Apache Indian, प्लस आपका स्टाइल जो है वो भी उसी की तरह है, तो you don't want to seem like you're mimicking or copying, you want your originality। तो मैं तुम्हारा नाम रोच रख रहा हूँ। तो उस वक्त मैं 12 साल का था, मुझे तो कोई I didn't care, मेरा नाम रोच रख लो, स्पाइडर रख लो, जो भी रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, as long as मेरा म्यूजिक हो रहा है।
किला जो था वो था जब मेरे स्कूल टैलेंट शोज होते थे तो मैं उसमें पार्टेक करता था, गाना गाता था, डांस वगैरह सारा करता था। तो ऑल जो काले वगैरह गोरे कहते थे यो ब्रो यू आर किलर मैन, यू आर किलर। तो फिर मैंने कहा okay, मेरी आइडेंटिटी रोच है, साथ ऊपर से किला मुझे कहते हैं, तो मैंने इकट्ठा जोड़ दिया। उसके दो फायदे ये है कि देखो एक ब्रांड बन गया, दूसरा फायदा ये देखो चाहे मुझे पसंद करो ना पसंद करो, एक बार आप नाम सुनोगे रोच किला आपको कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि ऐसा नाम है जो हट के है। तो वो मेरे लिए फेवर में भी है, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपका नाम बिल्कुल यूनिक है और आपका एटीट्यूड, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप म्यूजिक बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ही यूनिक है एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप अभी टोरंटो के शायद पहले ऐसे शख्स हो जो म्यूजिक करना शुरू किया था। आप एक ओरिजिनल कह सकते हैं, ओजी हैं जी जी टोरंटो के, जो म्यूजिक आप कह सकते हैं एशियन, साउथ एशियन डिसेंट म्यूजिशियन से आप उनमें से ओरिजिनल रह चुके हैं। अब आप यूके में है, बर्मिंघम में रह रहे हैं। बर्मिंघम ऑब्वियसली हमारा पंजाबी म्यूजिक का एक हब है, जी जो जी जहां से बहुत सारे टैलेंट उभर के निकले हैं और बहुत इंडिया तक भी पहुंचे हैं। इंडिया मतलब जैसे जय शॉन को ले लो, वो तो यूएसए में भी बहुत बड़े हैं। जी इतने सारे ऋषि रिच को लेके, ये सब मतलब एक पंजाबी अंडरग्राउंड मूवमेंट था जो जी अब मेन स्ट्रीम में आया है। तो आपका म्यूजिक और उनका म्यूजिक जी। कैसे, क्या आप भी ऐसे ही चढ़ना चाहते हो? क्या आप भी बॉलीवुड में एंट्री मार सकते हो? क्या आप नेक्स्ट यो यो हनी सिंह बन सकते हो? मैं नेक्स्ट किसी को बनना नहीं चाहता, मैं नेक्स्ट रोज किला ही हूँ, ठीक हूँ उसमें। तो मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल, देखो ऋषि रिच हो गया, जय शॉन, यू नो, बिकॉज हमारी जो एशियन फ्रेटर्निटी है यहाँ से यूके में, वो ऑब्वियसली बाहर से बहुत बड़ी लगती है, अंदर से बहुत छोटी है। हर बंदे को जानता है, सो वी आर ऑल फ्रेंड्स। मैंने ऋषि रिच के साथ कितने गाने किए हैं, a lot of पंजाबी आर्टिस्ट जैसा जैजी भी हैं, गिप्पी गरेवाल, गैरी संधू, इन तरह के आर्टिस्ट बहुत किया। फिर मुझे 2015 में चांस मिला था, मैं मुंबई गया था। मुंबई में जाके ना मेरे मीटिंग हुई थी मीत ब्रोस के साथ, यू नो मीत ब्रोस, ऑफ कोर्स, हु डजंट नो मीत ब्रोस, यस, चिट्टियां ऑफ कोर्स। कलाइयां वे। तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, मैं उनके साथ बैठा, उनको मैंने अपने गाने वाने दिखाए थे, उनको गाना बहुत पसंद आया कि ये तुम्हारा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जिस मैं करता हूँ बादशाह या हनी सिंह रफ्तार, उनका स्टाइल डिफरेंट है, मेरा स्टाइल टोटली डिफरेंट। तो उनको जरा पसंद आया कि ये जरा हट गया है, इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने दोनों इकट्ठे ने एक फिल्म के लिए गाना किया था, बॉलीवुड की फिल्म थी बागी, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर में फिल्म, और गाने का नाम था गर्ल आई नीड यू। तो वो मैंने गाया था, साथ अरिजीत सिंह ने गाया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर बॉलीवुड। उसके बाद फिर बिकॉज दैट सॉन्ग डिड वेल फॉर मी, उन्होंने आई डिड अनदर सॉन्ग फॉर बॉलीवुड। फिल्म थी राबता, वो गाने था मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना ना ना, वो किया हमने। फिर हमने वरुण धवन की फिल्म आई थी अभी जुड़वा 2 2-3 साल पहले, उसमें गाना था एक बार आ तो सही, दिल दिया है जहां भी तुझे दूंगी तो नजर मिला तो सही। That was actually recorded in Birmingham, our parts, man. वाओ। Meat Bros came to Birmingham, we went to the studio and काफी enjoy हमने किया। फिर उस वक्त Meat Bros कहते हैं मुझे, Manmeet was like, you know, Birmingham is a hub of Asian music, तो यहाँ पे आर्टिस्ट भी बहुत होंगे। मैंने कहा किसको मिलना है? कहता bro, I'm a big fan of Mulkeet Singh. I said no problem bro, so we called Mulkeet Paji, he came to the studio, we had a jam session, so it was quite enjoying. So going back to your question, you know, it's a dream। देखो हम छोटे होते बच्चन सर को देखते थे, फिर बड़े हुए सलमान भाई को देखते, तो it's a dream coming from Toronto, Canada, to be able to give music in a Bollywood film and then seeing them miming your vocals, you know, so it feels good. It just feels accomplished. और I think मन को खुशी होती है ये जान के कि जो आप कर रहे हो जिंदगी में वो लोगों को पसंद आ रहा है, so you're on the right track. Just keep working harder and never give up and just keep your head up and focus. Yeah. That's a really good motto for life, I guess, for everybody to learn that, to go. You have to keep going. And the other thing is, I don't think people realize how hard music industry is to sustain, to make music, be original, be relevant, and keep reinventing yourself or every single time. Every single time you have a song out, it's got to be the new thing that lasts a while. So what's your journey been like? आपकी journey अभी तक, मतलब आपने इतने सारे अच्छे amazing गाने किए हैं, सबको पसंद भी बहुत आए हैं। तो आपने जब ये रुबीना का गाना जो एंथम बन चुका है, रुबीना का फैन बेस का, जी जी। बॉस लेडी रुबीना के ऊपर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका ये गाना। मुझे Thank you for the सिर्फ इस tweet. वजह से नहीं, क्योंकि वो
सिर्फ नहीं इस वजह से नहीं क्योंकि वो रुबीना का एंथम बन गया, क्योंकि वो गाना भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत सोच समझ के उसके लिरिक्स पकड़े हैं। एंड वो गाना जब आपने सोचा था, हाउ डिड यू कम अप विद दिस सॉन्ग? देखो आपको मैं बताता हूँ कि शुरू से स्टार्ट करते हैं जर्नी का। मेरे बिग बॉस, मैंने आई स्टार्टेड वाचिंग बिग बॉस व्हेन यू वर इन इट। दैट वाज द सीजन आई स्टार्टेड वाचिंग आई स्टार्टेड वाचिंग इट। तो हम सारे फैन भी, आपके भी फैन थे हम। तो आई गॉट इंटरेस्टेड टू वॉच। आई वाज लिविंग अलोन एट दैट टाइम, तो रात को 9:30 बजे आता था यहाँ पे, तो रात को हम जरा काम खत्म करके रिलैक्स करके देखते थे, अनवाइंड करते थे। हम किसी और की जिंदगी में घुस जाते हैं, अपनी जिंदगी को छोड़ दो है ना। सो आई एंजॉयड इट। Then I kind of got sidetracked a bit. Then I started watching it last year again. मैंने देखा, और last year में सिद्धार्थ और आसिम, obviously there was the clash of the titans, you know. तो Yeah. मुझे पसंद है आसिम, like I liked him, I like सिद्धार्थ, but I like सिद्धार्थ, but then you know आपका जब एक होता है फेवरेट, तो जब वो स्प्लिट हो जाता है तो आप भी उसके साथ स्प्लिट हो जाते हो। तो आई वाज अ आसिम फैन, तो उसके लिए मैंने सोचा कि देखो हम एंटरटेनर हैं, तो हम कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए। तो हम म्यूजिशियन हैं, तो हमने कहा ओके लेट मी मेक अ सॉन्ग अबाउट इट। लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इस तरह कि it will go viral या इस तरह। मैंने कहा अपनी तरफ से just a personal thing, I'll do it। इतना प्यार मुझे पब्लिक का मिला उस गाने पे और वायरल हुआ इतना, I was like taken back, like wow, you know, there's a lot of other people that feel the same way as I do as a contestant, you know, like watching my favorite artist or contestant. Then after that was people started messaging saying please do one Shahnaz Gill, because I like Shahnaz too। तो मैंने कहा fair नहीं, तो शहनाज के ऊपर भी मैंने किया। So मेरी जरा एक अटैचमेंट होगी बिग बॉस के साथ ना। I feel like it's part of like what I do. I feel that I can contribute to it. So I actually got a call from Endemol Shine, and they wanted me to partake in the next show right after Big Boss, जो मुझसे शादी करोगे, जो शहनाज गिल वाला शो था। So that's वो मेरे लिए नहीं था। You know, I told them, I said, you know, look, that show is not for me, but in the future maybe Big Boss or something, हम देखते हैं कुछ शायद ना। तो we had a very big opportunity to be in this Big Boss, this 14, लेकिन obviously due to COVID and all those restrictions and stuff, so वगैरह नहीं हो सका इस साल, maybe next year। So but I'm still attached to the show, so I started watching the show। शुरू में मुझे पसंद आ रहा था एजाज खान, मुझे पसंद था, he was taking stand for himself। निक्की भी क्यूट लगती थी पहले शुरू में, पर मुझे शुरू में अभिनव और रुबीना जो they were a bit more closed। I think they were closed within each other, they were each other's support, but they weren't fully, maybe they didn't understand the game, या खुल के नहीं खेल रहे थे या खुद समझ रहे थे। तो मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग थी। फिर अली आया, अली मुझे पसंद आया, because मेरा कैरेक्टर जो ऐसा ह्यूमन बीइंग है वो लाइक वेरी आउटगोइंग, सोशल, किसी के साथ ठीक है, अगर कोई मुद्दा है तो खड़ा होऊंगा, वैसे फालतू में मुद्दे में नहीं खड़ा होता। As I watched more and more, मुझे पता लगा, I started liking Rubina, because I noticed, मैंने कहा घर में काफी मेल डोमिनेंस है, लेकिन ये जो लड़की है, she is fierce man, she's like a strong independent, she's like a lioness, you know what I mean? ये तो शेरनी है घर की, right? And then the fact that, you know, how her and her husband in the show, they work together, but at the same time फिर भी individual खेल रही है, and she doesn't need Abhinav to be her strength, neither does he need her as a strength, but collectively they're very strong। लोग अभिनव को कहते हैं अभिनव तू कुछ किया नहीं, तो यहाँ तक पहुंच गया। यार ये अभिनव की गेम थी जो इधर तक पहुंच गया, बाकी आए चले गए। अब अभिनव knows what he's doing, हम यहाँ से देख के घंटा डेढ़ देख के हम बता देते हैं ओ ये कर लेना था, ये करना चाहिए था। यार 23 घंटे you been in the house, you know it's not easy, right? अगर कोई आपके ऊपर गैंग अप हो रहा सारा दिन, आपकी एक साइड निकल आती जो आप नहीं दिखाना चाहते जनता को, वो ऑटोमेटिकली निकल आते, because you can't help it sometimes। So you know that's गाने भी मैंने कहा ये शब्दों का खेल नहीं, ये माइंड की गेम है। चलो आप वर्बली किसी को कुछ कह सकते हो, लेकिन किसी को माइंड गेम खेलना, दैट्स द होल गेम इज अबाउट, राइट? इट्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। तो वो मुझे पसंद आया रुबीना के बारे में। सो आई पुट अ पोल, क्योंकि उस वक्त राहुल भी काफी फेमस था, पॉपुलर था, मुझे पसंद था अली की वजह से। राहुल भी अच्छा था क्योंकि वो भी सिंगर है, तुम्हारा भी सिंगर था, जरा सॉफ्ट स्पॉट था उसके। तो मैंने कहा चलो देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जनता पे छोड़ देता हूँ, जनता आप मुझे बताओ किसके लिए गाना बनाया इस साल ना। तो जनता का मैंने पोल डाला, think about 15 to 20,000 votes came in, and it was a victory for Rubina, a landslide। यार देखो अभी अगर कहो ना 45 55 हो, तो फिर बंदा सोचता है कि maybe I'll do one more poll, शायद किसी को मौका नहीं मिला। This poll was 70 for Rubina, 30 for Rahul। It was like a landslide। So I was like okay ठीक है, मतलब है there is a huge following for Rubina fans, and they also share the same passion I do। Let's do it for them। तो मैंने गाना लिखा, और
गाना किसी के ऊपर लिखना बहुत इजी बात नहीं, आप आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम देखो गाना रोमांटिक गाना बनाना या कोई नाचने वाला गाना, कोई आइटम गाना बनाना इज इजी, दोस आर जेनेरिक टाइप ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है ना, आपको पर्टिकुलर डायसेक्ट नहीं करना गाना, आप जेनेरिक लिख सकते हो। लेकिन अगर रुबीना के बारे में गाना लिख रहा हूँ और अगर मैंने कोई काम की चीज नहीं बोली या कोई गलत बोला तो मेरी तो धज्जियां उड़ा देंगे ना फैंस। सो इट्स लाइक अ डू और डाई, है ना, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, इट्स अ डू और डाई, या तो आप चकास बनाओगे गाना या फिर आपको मतलब मुंह छुपाना पड़ेगा अगले बिग बॉस तक, राइट? तो आई एम सो ग्लैड कि लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, बहुत पसंद आया है। मतलब आई थिंक जब मैंने देखा था कि रिलीज़ हुआ है, मैंने ऑब्वियसली ट्वीट किया था गाना, थैंक यू सो मच। और मैंने जब देखा कि इट्स गोइंग इन 1000 रीट्वीट पे सीधा निकल रहा है, आई वाज़ लाइक अच्छा ये गाना जाएगा, ये सीधा जाएगा, वायरल हो गया था गाना। और मतलब गाना बहुत अच्छा है, उसका म्यूज़िकैलिटी भी बहुत अच्छा है, जो आपने बोला है भी बहुत अच्छा है, बहुत सोच समझ के आपने गाना बनाया है। You're absolutely right. You made a song that really represents Rubina as a character, but also the game, the Big Boss game. I think people appreciate the fact that you've spoken about what the game is about, and at the end of the day, people forget sometimes कि ये एक game है, ये एक game show है, reality show है, ये you know. So I think it was really beautiful the way you made that song, and not just that song. There's many songs that you've done that have been really excellent. So I think you've really proven yourself as a really amazing musician and an artist, and I hope that we're gonna see great things from you next. Like, what are we gonna see next from you, Roach Killa? There's a lot of stuff that's happening for me behind the scenes, and I'm just getting all my stuff ready. It's some stuff is for the Desi Asian market, some stuff is non-Desi. Like I'm working with a couple of mainstream labels, mainstream stuff. Reggae mera love hai, to a lot of more reggae mainstream. I'm hoping to connect and do a song one of these days with Sean Paul. क्योंकि मेरा स्टाइल काफी सिमिलर है उसके साथ, मुझे बहुत पसंद है शॉन पॉल. So hopefully in the future you'll see some crazy stuff coming from me, man. But इस वक्त हमारा सारा ध्यान इस वक्त रूबीना पे है कि हम चाहते हैं कि रूबीना ट्रॉफी जीते. तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप रूबीना के फैन हैं, प्लीज आप सपोर्ट करें उन्हें, जाए वोट करें. Vote for Rubina. Vote for. So this has become a vote appeal video, it seems. So नहीं नहीं नहीं, वोट के लिए. so do you watch this show? Do you watch Big Boss with your parents by any chance? अपने अपने parents No, के साथ कभी देखा है? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आई नेवर वॉच्ड विद देम. बट आई थिंक दे डोंट वॉच इट. आई डोंट थिंक दे वॉच इट क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग वाइज आई थिंक इट कम्स इन अ सर्टेन टाइम दैट इट्स नॉट इजी फॉर देम टू वॉच इट. तो आई डोंट थिंक दे Yeah, फॉलो it's इट. kind of late. मेरी मॉम से बात होती है कभी कभी, वो देखती रहती है मेरे स्टफ यूट्यूब पे, बताती है कि मैंने ये तेरा ये गाना सुना, मुझे बहुत पसंद आया, तेरा ये गाना सुना, But I think she's just missing me. She just wants an excuse to talk. Yeah, that's what happens with family when they're living away. So, when did you? So Yeah. you moved to the UK. You moved to the UK what, 5 years ago? Is that right? Or is it 10 years now? No, 10 years ago. Yeah, yeah. 10 years ago. And what would you say is the difference, the main difference? Like you've worked in Mumbai, you've worked in Toronto, so that's say the Canada scene. I'm not sure. Have you worked in the US at all? Yeah, I've worked everywhere. I mean, obviously Toronto is only like 45 minutes flight from New York, so we're there all the time. लेकिन the thing is, देखो, दो किस्म की म्यूजिक चलते हैं हमारी फ्रेटर्निटीज में. एक तो बॉलीवुड म्यूजिक है और एक है पंजाबी म्यूजिक, राइट? तो because I'm Punjabi, UK is a Punjabi hub. So when I came here, I came in 2010. And the reason why मैं आया था UK में, क्योंकि उस वक्त कनाडा में कोई ऐसे resources नहीं थे, कोई ऐसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे म्यूजिक को इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए, राइट? तो UK, growing up in the UK, UK music is worldwide. अगर आप यहाँ पे हिट होते हैं तो worldwide हिट हो जाता है, बन जाता है नाम. That's why I came here. That's how I built my name. That's how I ended up going to Mumbai. That's how I got into the Bollywood film. So it just shows, देखो, अगर आपको किसी चीज का, doesn't matter if music or not, किसी चीज का लाइफ में अगर पैशन है, so don't look back. Go with the flow. You only have one life to live. You try your best. Agar nahi hota, that's not a problem. At least when you're 50 years old, you can look back and say, at least I tried. मतलब ये नहीं आप सोचोगे यार पूरी जिंदगी में आप रह गया शायद कि oh my god, I try, I wish. क्योंकि वक्त वापस नहीं आता. तो आपका जो पैशन है जिंदगी में, जो मर्जी आपको कहे, अगर आप believe in yourself first, अगर आप अपने में बिलीव करोगे तो जनता आप पे बिलीव करेगी. So just do it from the heart and don't worry about anything. आप right left ना देखो, सिर्फ सीधा देखो, focus on your goal.
So there's so much love for you right now that's coming in at the. I'm kind of looking for a question from the audience, but they're just giving you a lot of love. So I'm going to start throwing up some love for you. Thank you Next so much. for बहुत प्यार. next from me, Roach, love, Archana, awesome, bro. Yes, Roach. Thank you I so think that a much. lot of you okay, we got one here. Make a song for Nikki, Rubina, and Abhinav. Okay, he can just keep making songs for you guys. Like, okay, you just keep choosing. What's up You with know, that? I was doing an interview and somebody asked, they said, भाई अगर आप जाते हो बिग बॉस के घर में तो जाने से पहले आप अपने ऊपर कोई गाना बनाओगे? मैंने कहा नहीं, It's a hard जनता one. बनाएगी. जनता Now बनाएगी मेरे लिए. you started something and now it's never gonna finish. Now Yeah, जब भी basically. बिग बॉस का बिग बॉस होगा आपको every season कोई ना कोई गाना बनाना पड़ेगा. मैंने तो कहा है कि अब बिग बॉस के ऊपर ही गाना बनाऊंगा. Forget the contestants now. अब मैं बिग बॉस के ऊपर गाना बनाऊंगा. तो वो जो बिग बात बॉस है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. मेरा गोल है कि उसको हटा के अपना गाना लगवाना हुआ. That's a good idea. That's a very good idea. That's a good. I think that's a good plan. That's a good plan. But you know what? I'm just thinking about this. Are you thinking that if you ever get asked to come on to Big Boss as a contestant, would you go? It's a tough one. I would like to go. It all depends on the circumstances, what's happening. क्योंकि देखो, you know it, you've been in there. There's two ways it could come out. It's either a career boost or a career suicide. It depends on how much control you have. You know, It depends. Yeah, it depends on the season. It depends on the like a lot of stuff. Yeah. Yeah, So it depends. I would love to go in there, लेकिन मैं एक बंदा हूँ जो थोड़ा टेम्पर है मेरे में. अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं चुप तो रह नहीं सकता. Obviously, it's nothing physical like that, but I think maybe that's what they want. People that are actually verbal and चुप के गीदड़ की तरह नहीं बैठे रहते. They want शेर चाहिए घर में, तो बुला लो हमें, पे देखते हैं क्या होता है. So you're up for it basically. So Endemo Shine, अगर आप ये देख रहे हो तो रोज किलर तैयार है नेक्स्ट सीजन के लिए. ऑडियंस आप बताइए कि आप देखना चाहते हैं रोज किलर को घर के अंदर नेक्स्ट सीजन 15 के विनर रोज किलर. देखो देखें अब देखो मेरी फैन बेस के अलावा, if I go into Big Boss house, I know my beautiful Rubina fans, they'll support me. My Asim fans will support me. The Shanaz Gill fans will support me. That's a big fan base just from Big Boss itself for their TRP. तो अगर आप मुझे नहीं बुलाते, ये आपका लॉस है. I love it. I'll put a good word in for you, Gil. I'll put a really good word in for you, Roach. I'll be like, take him. He's got a fan following from across the board. This guy is going to come in. That's it. We're pitching you right now. This is the pitch. This is the pitch. I'm sure someone from. I'm sure someone is watching this right now who is like, okay. I'm sure Endemol secretly watches this. मेरी कंडीशन है कि सिर्फ बिग बॉस घर के अंदर एक छोटा सा स्टूडियो होना चाहिए मेरी सैनिटी के लिए. अगर मुझे कोई ज्यादा तंग करेगा, मैं उसके ऊपर गाना बना दूंगा उसी वक्त. That's a good idea. That's a good idea. They have it. I mean, they've got that confession room, diary room, whatever they want to call it. Make that into a little DJ booth. You just walk in there anytime and just be like, "I'm making music now." Like a different, like a new, like I'm making a new song like now. A Tupac. Live on TV. I'm doing a diss record. I'm doing a diss record on the contestants in the house. Yeah. So every time, I think imagine this. Hypothetically, forget me just for instance, अगर ये भी एक घर में इस तरह के एक बना देते हैं एक टास्क कि ये टीम है, दो जैसा सिंगर राहुल था और जान थे, अगर घर में एक स्टूडियो बनाते हैं, two teams make a song, see whose song is better for कार्या के लिए. मतलब it is something different. Public would like to see that क्योंकि public देखती नहीं है कि studios में क्या हो रहा है. जनता सिर्फ so it's like another entertaining aspect of a show that you can bring out. Mm-hmm. Yeah, so I love it. I think it's a good idea. मेरा idea है भाई. Yeah, you can do that. So we've got Roach, sir. You have a huge fan base in Nepal too. We love you so much, and your song "Boss Lady" for Ruby is amazing. So we've got a lot of this, like, buddy. Like, there's no questions for you, but there's just a lot of love. So thank you so much. Let's just take that love. There's a lot. I mean, I usually go to questions by now, but no, there's no questions. It's like, I love you. I'm your big fan.
Roach Killa, you rock. So there's a lot of love there, and I think that is super important. And I think you're doing a good job. You're doing a good job, and I wish you like so much more success in life. And I know with the talent that you have and what you've shown us thus far it's just gonna amplify now, hopefully, and like we'll see you make some really good music that we're like, and you know, now that we're in touch, I'll definitely stay in touch and like try and see what we can figure this stuff out. I can't hear you now. I think, are you there? Yeah, I'm there. Net ka issue hota kabhi kabhi, but I'm here. Yeah, so are you, so okay, so basically any last words to the fans who are giving you so much love right now? I just want to say dhanyawad, shukriya to everybody who tuned in today and the people on social media. Jahan bhi hai, jiske bhi fan hai. It's not just about me, it's about your favorite contestant. आप support करो, जिसको भी support करते हो, लेकिन मैंने रुबीना के लिए किया, so thank you so much that आप लोगों ने इतना appreciate किया और इतना प्यार दे रहे हो. So let's not take our eye off the prize. Just keep supporting your favorite contestant. मैंने एक बात definitely कहना चाहता हूँ कि देखो, जब भी मैं गाना बनाता हूँ किसी के ऊपर, मैं कभी किसी other character assassination नहीं करता. किसी को नीचा दिखा के खुद का बड़प्पन दिखाना is not a real man's job. You have to respect everybody, but you have to highlight your, strength. You don't highlight somebody else's weakness. अगर आप देखो गाने में मैंने कहा है, एक था राजा और एक थी रानी, रानी गई जीत राजा लेने गया पानी. अब सारों को पता है मैं राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ, पर लेकिन इसमें डेफिमेशन कोई नहीं है, इसमें सिर्फ एक कॉमिकल जोक है. You understand? तो मैंने किसी contestant को नीचे नहीं दिखाया अपनी रुबीना ऊपर दिखाने के लिए. So you have to understand that I'm just giving you a life message that in order for you to succeed in life, you don't have to step on people. So don't ever think that way. Just always focus on yourself and respect everybody. This is an art. This is life. You just pyar mohabbat se raho. And that's the only thing I can say to you guys. So keep supporting everybody that you support in general. And of course, Rubina's fans, please support Rubina. Share the song, viral all karo. I'm really happy that you guys like it. And Andy, thank you so much for having me. I'm actually a fan of yours as well since when we were watching Bigg Boss. So it's an honor to be on your show and to be able to speak to you. And the fact that हम England में हैं, तो जरूर मिलते हैं हम इस लॉकडाउन के बाद. हाँ, लॉकडाउन अगर खुलेगा तब ना. So thank you again for being on the show. I am so happy that we were able to do this, and I really wanted to get you on as soon as the song obviously was something that I really, really, really loved, and I was listening to the rest of your songs and going, oh my god, this guy's so talented. He needs to have a platform. He needs to get out there and get some more exposure and just be out there and be known for the amazing work you're doing. Thank you for being on the show, and hopefully I'm going to be doing another late night show. And I'm going to be having musical talent on the show that's actually performing. So I'm going to definitely keep in touch with your management for that as well. So hopefully that can work out. But take care of yourself, and thank you again. Peace. Wow. Thank you guys. One love. Peace. Talia, talia, talia. Roach Killa ke liye talia. Okay, so that was Roach Killa. He's gone now. But thank you आप सबको जो यहाँ पे आके देखा है हमारा amazing show आज के लिए. And guys, all my love to you guys. Take care of yourselves, and I'll see you tonight. Bigg Boss के बाद review हमेशा चालू रहेगा. So see you later. Take care of yourselves. Goodbye. Goodbye. Goodbye.